Hello and welcome. Now in this video we'll try to answer few simple type of question based on the concept of refraction or the relations or proof which we have learned till now. Okay, so let's begin with the very first sort of question. But before that, what I want is let's simply try to understand a simple note. Suppose children, see, we have two medium, right? One is rarer and second is denser medium. Now we know that when light travels in a rarer medium, the speed of the light increases. Now why does the speed increases? Just because in rarer medium the particles are less, so there will be low or less opposition from the medium, which I can say in another way as rarer medium has low refractive index, right? Refractive index low rarer medium का कम होता है. But exact other side में when a light enters into a denser medium, the speed of the light actually decreases. Now, why does the speed decreases? Because in denser, since it is a denser medium, in denser medium, there will be more particles, and since there are more particles, the opposition offered by this medium will be more. Matlab, we can say denser medium ka refractive index is high. Okay. So simply, if I sum up these two concepts and if I want to convey in a very short form, I can say a ray of light will bend more while going into a medium with high refractive index than when going into the medium with a low refractive index. This simply means that the bigger the refractive index, the greater is the bending. Okay, मतलब light ज़्यादा किधर bend होगा जिधर refractive index ज़्यादा है, and where the refractive index is more, the refractive index is more in denser medium. So light will bend more in denser medium and the bending will be less in the rarer medium. Fine. Now let's try to answer few concept related some questions based on this concept. The first question, it is a ray of light is incident obliquely matlab at certain angle at a boundary separating the two medium. Explain the behavior. So we have one particular, let's say glass slab wala experiment. We have two medium. Explain the behavior of light. Now what we mean by that, explain karna hai, light ka behavior matlab kya? They are actually expecting from us कि light will bend towards the normal या away from the normal, ये बताओ. ओके, नाउ ये बताने के लिए आई मस्ट नो कि वो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, रेयर मीडियम से या से डेंसर मीडियम की तरफ या वाइस वर्सा. सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि देर विल बी टू मीडियम. सो देर हैज़ टू बी, इफ देर आर टू मीडियम, वन ऑफ द मीडियम हैज़ टू बी रेयर एंड सेकेंड हैज़ टू बी डेंसर. सो फॉर दैट दे शुड गिव सर्टेन नोट या कुछ तो देना चाहिए. एंड येस दे हैव गिवन. द फर्स्ट वन इज if refractive index of Ri matlab refractive index, if refractive index of second medium is greater than refractive index of first medium. Chalo, now the question is complete. They are saying if the refractive index of second medium is greater than refractive index of first medium, तो light कैसा behave करेगा, कैसा behave करेगा मतलब travel from away towards the normal या फिर sorry bend towards the normal होगा या away from the normal होगा, ये बताना है. तो कैसे बताएंगे? Let's start. सो टू बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन वी मस्ट नो, ये बात तो ठीक है कि रिफ्रैक्ट सेकेंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम से वगैरह एंड ऑल दी है, बट वी मस्ट नो कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है. नाउ वी हैव जस्ट अंडरस्टैंड द नोट. इन नोट वी हैव लर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है, ओके, एंड रेयर मीडियम का कम. सो दे आर सेइंग इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज ग्रेटर. नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, आई एम गोइंग टू राइट कि the refractive index of rarer medium is less than the refractive index of denser medium. Now if I read this line, if refractive index of second medium is greater than first, second medium का refractive index ज़्यादा है, मतलब second medium क्या होना चाहिए? denser medium होना चाहिए. अगर second medium denser है तो first medium क्या होना चाहिए? first medium rarer होना चाहिए. So this implies that फर्स्ट मीडियम इज़ अ रेयर एंड सेकेंड मीडियम इज़ अ डेंसर. फाइन, अब मुझे पता चल गया कि एक मीडियम रेयर है, सेकेंड डेंसर है. कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है ये भी पता चल गया. नाउ लेट से अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो वो एग्जैक्टली किधर से किधर जा रहा है? इट इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम. सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, इट इज़ एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer medium to denser medium. Now children, we know that when light travels from rarer medium to denser medium, observe this in this particular picture, it is traveling from air to glass. जब लाइट रेयर से डेंसर में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? वी नो द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, व्हाई इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल? बिकॉज द स्पीड ऑफ द लाइट decreases. So we are going to write this: the velocity of light decreases and it bends towards the normal. So this is how the light will behave. Well, we can even add few more points to this. One more, that
since the velocity is decreasing and it is bending towards the normal, observe this two angle. Which two angle? One is angle of incidence and second is angle of refraction. कौन बड़ा होगा इसमें? Of course, angle of incidence will be more. So I could say the angle of incidence will be greater than the angle of refraction. So this is the final summary or the explanation of the entire question. When light is, how the light will going to behave when it is traveling from rarer medium to denser medium. Okay. Now instead of rarer to denser medium, they have asked the question in a form of comparison of two refractive index. कौन सा medium का refractive index ज़्यादा है, ऐसा कुछ तो बोला था आपने को. Okay. This was the first question, first part. Let's see second part of this question. Once again the headline is same. Second में they have just changed if the refractive index of first medium is greater than the second medium. Now this is a very good chance to understand the same question in second time. Okay. Once again हम start कैसे करेंगे? Okay. देखो हमेशा फिजिक्स में व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट. हम हमेशा सबसे पहले ट्राई टू लिंक ये कौन से कॉन्सेप्ट का है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, लाइट का बिहेवियर पूछा है, मतलब मुझे एक बात क्लियर है कि ये पता करना पड़ेगा लाइट किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है, रेरर से डेंसर के डेंसर से रेरर. तो उसके लिए कैसा पता चलेगा आगे. सी वन थिंग वी ऑलरेडी नो, वो हम लोग लिखेंगे. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. ओके, दिस वी कैन राइट इवन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन. ये हम लोग लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर रीडिंग दैट सेकेंड पॉइंट बी, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड से ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, डेंसर का. ओके, मतलब फर्स्ट मीडियम डेंसर है. अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर है तो सेकेंड क्या होना चाहिए, rarer medium होना चाहिए. So I'll write this implies that first medium is a denser and second medium is a rarer medium. Now till this point it's very clear कि कौन सा medium rarer है, कौन सा medium denser है. Now let's say since we don't know light कौन से first से second में जा रही है या second से first में, if we take light, let's say if light is traveling from first medium to second medium, it actually means that it is traveling from denser medium to rarer medium. बराबर. लाइट एंड व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, बच्चे लोग क्या होता है. ओके, वी कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम. क्या होगा जब डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. व्हाई? द ऑल्सो द रीजन बिहाइंड दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज. सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगा. ओके, टेक्निकली द आंसर इज कंप्लीट टिल दिस पॉइंट, बट if we want to add one more point related to angle, when it is traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium मतलब नीचे वाला ये जो angle है, this will be angle of incidence and ऊपर वाला will be angle of refraction. So in this case the angle of incidence will be less than the angle of refraction. Okay, so this is how by simply using those two notes we have tried to answer this concept or this question. Let's move on to the next question, and it is, will light travel through a glass slab with the same velocity as it travel through air? मतलब क्या लाइट जब ग्लास स्लैब में ट्रैवल करेगा, एयर से ग्लास स्लैब की तरफ जाएगा, तो क्या उसका वेलोसिटी सेम होगा? पहले हर कॉन्सेप्ट का पिक्चर क्लियर करो. ऐसा कुछ तो बोला है उन्होंने, राइट? लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. नाउ व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्या उसका वेलोसिटी दोनों में सेम होगा क्या? ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका क्वेश्चन है. मानना नहीं, ऐसा उनको पूछना है. तो कैसे पता चलेगा? सी वन थिंग वी नो, ऑफकोर्स दोनों में वेलोसिटी सेम नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि एक एयर है, एयर मतलब रेरर मीडियम, और दूसरा ग्लास मतलब डेंसर मीडियम. दोनों अलग मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो दोनों का वेलोसिटी भी अलग होगा. नाउ अगर इफ यू कैच दैट पर्टिकुलर नोट, वेलोसिटी पूछा है उन्होंने, बराबर. वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? वो कौन सा मीडियम है उस पर. वो कौन सा मीडियम है, रेरर है या डेंसर, उस पर. अच्छा, इसका मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है रेरर डेंसर के अलावा? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ सिंस द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वन एंड द सेम. वी आर गोइंग टू राइट दैट फर्स्ट पॉइंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है. ओके, as refractive index increases, why refractive index will increase? because light यहाँ पे किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है, एयर से ग्लास में. ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा. सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, ज़्यादा है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल डिक्रीज. सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास,
okay, the speed of the light will in this case will less or it will decrease. So that's how we're going to answer this particular question. Only simple thing है बच्चे लोग, we have to just keep remember understand कौन सा medium rarer है कौन सा medium denser है. Just by understanding this particular note we can try to answer every question. Okay, and what is next is will the velocity of light be same in all the medium. देखो क्वेश्चन सेम ही है, क्या वेलोसिटी लाइट का वेलोसिटी हर मीडियम में सेम होगा ऐसा उन्होंने पूछा है. ऑफ कोर्स आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग. वही फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट. एंड सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, every medium has different refractive index, right? Refractive index is different for different medium, thus the velocity of a light will also be different. Fine. So if you observe or if you understand, we have tried to answer all this question based on only that simple one concept. क्या? When light enters into rarer medium का refractive index लो या कम होता है उसका speed increases, and when light enters into denser medium का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मोर होता है, तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ एंटायर कॉन्सेप्ट और द क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय.